Vivo Y90 is the latest budget smartphone from Vivo. इसकी कीमत है around 19,000 rupees और for this price I think it's very well worth it. लेकिन इस फ़ोन के बारे में बात करने से पहले I want you to subscribe to my channel और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो press the like button. Okay, let's talk about the Vivo Y90. Build quality and appearance wise, I'm very happy with the phone. ये देखने में 19,000 की डिवाइस नहीं लगती. It looks way more expensive. इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मॉडर्न है. There's a curved notch on the top and a pretty small chin. I don't think अगर आप ये फ़ोन किसी को दिखाओ तो he would guess कि इसकी प्राइस इतनी कम है. The rest of the phone is made of plastic और ये काफ़ी matte finish plastic है, not like the plastic devices that we have now. So I do like that. ये इस्तेमाल करने में इतना स्लिपरी नहीं है. One major thing about the back of this phone is that इसके अंदर कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है. I guess it's to cut down the cost. लेकिन इसके अंदर फेस अनलॉक है और जो इसका फेस अनलॉक है वो काफ़ी तेज़ है और इसकी वजह से I don't really miss the fingerprint sensor at all in this device. So overall I really like the build quality of this phone. Once again इस्तेमाल करने में ये एक अल्ट्रा बजट फ़ोन नहीं लगता. It feels like it's a heavy expensive phone. और इसके अलावा appearance wise it's really modern. So in build quality it gets a solid recommendation from me. Display wise this phone has a 6.2 inches 720p display और even though ये 720p है I don't think that's a bad resolution क्योंकि इस फ़ोन का overall size काफ़ी compact है. Or when it comes to the quality, I'm really happy with the quality. The colors look really good and the white balance is especially fantastic. मैंने कोई और फ़ोन इस कीमत के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जिसका white balance इतना on point हो और इस फ़ोन के अंदर ये चीज़ है. It's a 720p panel so obviously ये 1080p जितना crisp और clear नहीं है लेकिन for me the thing that matters is the colors and the white balance. Because of those things you get a much better experience, you know, browsing through content, watching photos, movies and everything. So उसकी वजह से I'm happy with the display. कैमरा वाइज इस फ़ोन के अंदर एक सिंगल 8 मेगापिक्सल कैमरा है बैक पे और एक 5 मेगापिक्सल कैमरा है फ्रंट पे. यूजुअली इन अल्ट्रा बजट फ़ोन्स लाइक दिस कैमराज इतने अच्छे नहीं होते और अगर आप इतना अल्ट्रा बजट फ़ोन ले रहे हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम कॉम्प्रोमाइज़ और द कैमरा स्पेशली द बैक कैमरा इज़ वन ऑफ दोज कॉम्प्रोमाइज़. अच्छी लाइटिंग के अंदर इट कैन टेक सम डिसेंट फोटोज़ बट डोंट रियली एक्सपेक्ट एनी माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स फ्रॉम दिस कैमरा. It also has some problems in focusing. It doesn't really hit the mark in the first try. लेकिन जो इसका front camera है, that is actually really good. The front camera takes really good, really clear photos. और अगर आप ऐसे user हो जो कि काफ़ी सारी selfies लेते हो, then I think you will be actually happy with the front camera. Overall जो back camera है, that's not the strongest aspect of this phone. लेकिन this is a budget phone, so obviously they had to cut some corners. And I'm actually okay with that. Performance wise this phone has a MediaTek Helio A22 processor with 2GB of RAM. For light workload and just everyday tasks this processor is perfectly fine. आप इस पे तकरीबन सब कुछ कर सकते हो. You can check your emails, use social media apps like Facebook, Instagram और उसके अंदर आपको कोई issues नहीं होंगे. There is some scrolling lag, but you can get the work done. Unfortunately, the weakest part of this phone is its software. इसके अंदर अभी भी Android Oreo है, which is pretty outdated for a phone that's coming out in 2019. Android Q is right around the corner, so in a few months this is just gonna get more outdated. इसकी वजह से इसके अंदर कुछ फीचर्स नहीं हैं जो कि मुझे चाहिए. लाइक डार्क मोड जो कि कलर ओएस के नए वर्जन के अंदर है और काफ़ी अच्छा है वो इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल नहीं है और सेटिंग्स के अंदर सर्च की भी ऑप्शन नहीं है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट द परफॉर्मेंस इज़ एक्चुअली प्रीटी डिसेंट. ऑल एप्स ओपन फेयरली क्विकली एंड देयर इज़ वेरी लिटिल लैग. कैजुअल एंड आर्केड गेमिंग इज़ आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. बस ये है कि इट टेक्स अ बिट लॉन्गर टू रेंडर एंड
लोड दी एप्लीकेशंस, लेकिन इट कैन गेट द वर्क डन इवेंचुअली। इसके अंदर एक 40-30 मिलियन पावर बैटरी है, जो कि इन माई ओपिनियन इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फ़ोन। 2 दिन के लिए इस फ़ोन को ईजिली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये इतना हैवी प्रोसेसिंग फ़ोन नहीं है और इसका डिस्प्ले भी लाइक 720p है, इट डजंट कंज्यूम अ लॉट ऑफ बैटरी। उसकी वजह से यू कैन जस्ट यूज़ द बैटरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ओवरऑल आई थिंक कि इस प्राइस के हिसाब से यू आर गेटिंग सम रियली ग्रेट फीचर्स। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, एंड इट फील्स लाइक अ मच मोर एक्सपेंसिव फ़ोन। सो आई थिंक कि अगर आपको एक फ़ोन चाहिए टू गेट बाय एंड जस्ट टू गेट वर्क डन, आई थिंक यू विल बी हैप्पी विद दिस फ़ोन। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो who just needs a phone to get by, or if you are looking for a phone for your parents or इतना tech savvy person नहीं, तो I think that person or you will be more than happy with this phone. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and I'll see you in the next one. Peace.